Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online series in Future Executive School Silamali. How are you educational class? I hope you are learning well. This is your math class. Open your book page number 6. Today our topic is about hot and cold. Math book page number 6. Open your reader. Okay, today our lecture is about hot and cold. Hot. A hot and cold comparison shows the difference between things that are hot. Hot, high temperature, and cold, cold, low temperature. Like hot. Hot things like fire, boiling water, sunlight. क्योंकि फायर जो आग होती है वो भी हॉट होती है और बॉइलिंग वाटर जो हम पानी उबालते हैं वो भी हॉट होता है और जो सनलाइट सूरज की रोशनी वो भी हॉट होती है. नेक्स्ट कोल्ड. आइस, आइसक्रीम एंड रेफ्रिजरेटर, ये हमारे क्या होते हैं कोल्ड. जो ठंडी चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कोल्ड. यू कैन सी हॉट 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 कॉफ़ी. ये देखिए इसमें स्मोक है ना, तो इसका मतलब क्या है ये हॉट है. हॉट जो हम आग पे चीज़ें बनाते हैं, जो हम पकाते हैं चीज़ें, वो क्या होती हैं हमारी हॉट. दिस कॉफ़ी इज़ हॉट एंड दिस आइसक्रीम इज़ कोल्ड. आइसक्रीम कोल्ड. यम्मी आइसक्रीम. आइसक्रीम ठंडी होती है तो इसे हम क्या कहेंगे आइसक्रीम इज़ कोल्ड. एंड नाउ लुक एट योर फ्रेंड एली. एली एली से आई एम फीलिंग कोल्ड. एली को कोल्ड फील हो रहा है, मतलब उसे सर्दी लग रही है. बट दिस कॉफ़ी इज़ कीपिंग मी वार्म. वो कह रहे हैं कि ये जो कॉफ़ी है हॉट कॉफ़ी है तो ये मुझे क्या कर रही है वार्म कर रही है कि मुझे फिर सर्दी नहीं लगती. आई एम फीलिंग कोल्ड बट द हॉट कॉफ़ी इज़ कीपिंग मी वार्म. Now you can see we have two treat. Cold treat, hot treat. Cold ये वो वाला स्टॉल होगा जहाँ से हम कोल्ड आइटम्स बाय करेंगे. कोल्ड आइटम्स कौन से होते हैं जैसे लाइक जूस, आइसक्रीम एंड कॉफ़ी शेक. कोल्ड आइटम. एंड हॉट गरम like fries, burger, coffee. This treat is for hot object and this treat is for cold objects. अब हमने क्या करना है help Ellie identify the hot and cold treats by drawing a line to match the treat to the correct stall. Okay, you can see different items of treats like coffee, juice, burger, ice cream shake, ice cream and fries. Match cold items with cold treat. Firstly, we can match cold item. Coffee is cold? No, coffee is hot. We can't match with cold treat. Okay, juice is cold? Yes, juice is cold. We can match juice with cold treat. Like that. Okay. The burger is cold? No, the burger is hot. We can't match. Okay. Ice cream shake is cold or hot? No, ice cream shake is cold. Yummy ice cream shake. Match with cold treat. Okay, what is this? Oh, looking nice. This is ice cream. Cone ice cream. Cone ice cream is also cold. Match with cold treat. Now we can match hot objects with hot treats. Coffee is hot? Yes, coffee is also hot. Hot coffee match with hot treat. Now the next is burger. Burger is hot or cold?
Yes, burger is hot. We can match burger with hot treat. Like that. Okay, now we have fries. Yummy fries. Fries are also hot object. Match with hot treat. Okay, you can see help Ali identify the hot and cold treats by drawing a line to match the treat to the correct stall. हमने बोर्ड पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए लेकिन जस्ट हम अगेन करेंगे हॉट कॉफी मैच विथ hot treat like that. Okay, juice is also cold. Juice is matched with cold treat. Now, bun burger is also matched with hot treat. Ice cream juice, ice cream shake matched with cold treat like that. Ice cream is also cold item matched with cold treat, and fries is also hot matched with hot treat. I hope you will understand the comparison between two things hot and cold. Okay, educational class. Allah Hafiz.